Good morning, student. I am going to explain you about congruence. What is congruence? Congruence means having same shape and size. Same shape and size. Congruence means having same shape and size. Here are two figures. That is a ball and that is also a ball. There are two balls. Each has radius 4 centimeter. There are two balls. Each has radius 4 centimeter. So these two balls are congruous. In case of balls, in case of line segment, here are two line segment. In case of line segment, के केस में here are two line segment AB and CD. If these two line segment have equal length, these two line segment are 5 centimeter and second is also 5 centimeter. AB is 5 centimeter and CD is also 5 centimeter. So these two line segment are congruous. First I want to explain you what is line segment. What is line segment? A line segment has two end point. There is no endless point in line segment. We can measure the length of line segment. Line segment is limited. हम line segment के length को measure कर सकते हैं. Here AB is a line segment. AB is 5 centimeter and CD is also 5 centimeter. So we can say these two line segment are congruous. AB congruous CD. These two line segment are congruous. In case of angle, see here. In case of angle, if there are two angles, here is angle and here is also angle ABC and here is PQR. There are two angles. How can we say these two angles are congruous? If measure of these two angles, that angle is 30 degree and that is also 30 degree. If measure of these two angles are equal, then we can say these two angles are congruous. If measure of these two angles are equal, then we can say these two angles are congruous. If measure of these two angles are not equal, if here ABC is 60 degree and here PQR is 40 degree, measure of angle is not same, then we can say these two angles are not congruous. तो जहां पर एंगल का मेजर इक्वल है, ये आपका 30 है, ये भी 30 है, एंगल का मेजर इक्वल है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है. मींस अगर एक एंगल की हम कटिंग करके काट करके दूसरे एंगल के ऊपर रख दें, अगर उसको पूरा कंसाइड करे या पूरा ढक ले, तो उसको हम कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है. लेकिन ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, मेजरमेंट अलग अलग है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं है. इन केस ऑफ ट्रिंगल के केस में, सी हियर, in case of triangle, here are two triangle ABC and PQR. Here are two triangle ABC and second triangle is PQR. ABC and PQR. See here, there are two triangle ABC and PQR. If side of these two triangles are equal, AB is 5 centimeter, PQ is also 5 centimeter,
BC is 6 centimeter, here QR is 6 centimeter, here AC is 8 centimeter and PR is also 8 centimeter. See here, AB is equal to PQ and BC is equal to QR, AC is equal to PR, then triangle ABC कांग्रेस ट्रिंगल PQR। मतलब इस ट्रिंगल की तीनों साइड, इस ट्रिंगल की तीन साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये ट्रिंगल क्या है, कांग्रेंस है। These two triangles are congruous because AB is equal to PQ and BC is equal to QR, BC is equal to QR, here AC is equal to PR, AC is equal to PR, then two triangles are congruous, that means ये दोनों ट्रिंगल कांग्रेंस हैं। लेकिन एक बात और भी कांग्रेसी में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर साइड अलग अलग प्लेस पर लिखी गई है, ये ऐसी कंडीशन है, यहां ABC ये आपका PQR है, देखो A है, B है, C है, ये आपका P है, Q है, R है। अगर आपका AB 5 है, यहां QR 5 है, AB 5 है, यहां QR 5 है, BC 6 है, आपका PR 7 है, BC 6 है, आपका PR 7 है, AC जो है 8 सेंटीमीटर है, हियर PQ आपका 8 सेंटीमीटर है। अब देख रहे हैं साइड अलग अलग पोजीशन पर है, AB QR के इक्वल है, BC 6 सेंटीमीटर है और यहां पर जो है ये PR आपका 6 सेंटीमीटर है, PR क्या है 6 सेंटीमीटर है, यहाँ AC 8 है, यहाँ PQ 8 है। इस ट्रिंगल की तीनों साइड की इक्वल है, तब भी ये ट्रिंगल आपस में कांग्रुएंस है, साइड का इधर उधर ट्रांसफर होने से जो कांग्रेसी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस ट्रिंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो इसका मतलब ट्रिंगल ABC और PQR आपस में कांग्रुएंस है। ऐसा नहीं होता कि साइड AB PQ के ही इक्वल होना चाहिए। AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसमें कहीं भी 5 सेंटीमीटर होगा, तब भी ये एक दूसरे के कांग्रुएंस होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्राइटेरिया फॉर congruence of triangle. See here, how triangle are congruous. I take example. First criteria, yes. Full form of yes means side. Here I am going to explain you about side and side. I am going to explain you about side. See here are two triangles ABC and PQR. 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 How you check congruency of triangle? If AB is 5 centimeter, AB is 6 centimeter, not take 5. Here PQ is equal to 6 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, QR is equal to 7 centimeter, AC is 9 centimeter, here PR is also 9 centimeter. See here, in triangle ABC and triangle PQR, see here, in triangle ABC and PQR, side AB is equal to PQ, side BC is equal to QR, side AC is equal to PR. See here, then triangle ABC congruence triangle PQR. But how you write it? See here, in triangle ABC and triangle PQR,
ABC and PQR. Here you write AB is equal to PQ. Under here you write AB. Here you write AB is equal to PQ. Here you write given. Here you write given. See here. AB is equal to PQ. एक बात बच्चों जरा याद कर लेना. देखिए यहाँ आपने AB लिखा है, ऊपर जो ट्रिंगल का नाम आपने AB लिखा है, देख लेना उसमें AB है या नहीं. ऐसा नहीं कि आप AB इस साइड में लिख दे रहे हैं, PQ इस साइड में लिख दे रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. देखिए यहां पर आपने लिखा AB इज इक्वल टू PQ, तो यहां चेक कर लो AB जो ट्रिंगल का नाम आपने ABC लिखा है उसमें AB है या नहीं. अगर नहीं है तो आप रॉन्ग लिख रहे हैं, उसको सही कीजिए. सेकंड देखो AC, सेकंड इज AC is equal to PR. Here under you write AC is equal to PR. Here in bracket you write given. Here you write given AC. AC is equal to PR. Here you write given AC PR के equal है. Here BC. Here you write BC is equal to QR. Here BC is equal to QR. Here you write given. All of you see here, three sides of this triangle is equal to three sides of this triangle, so these triangle are congruent. All side of this triangle is equal to all side of this triangle, so these two triangle are congruent. Under you write so triangle ABC, congruent triangle PQR. Here you write yes property. Here you write yes means side. These two triangles are congruent each other. Now I repeat it. AB is equal to PQ is given. AC is equal to PR given. BC is equal to QR given. So triangle ABC congruent triangle PQR, yes. Now I am going to explain you about SAS property. Full form of SAS, side angle side. Full form of SAS, side angle side. See here how you use this property. If two sides of one triangle and corresponding angle of these two sides are equal to two sides of other angle and corresponding angle, then these two triangles are congruent. See here, two sides of one triangle and the angle between these two sides are equal to two sides of other triangle and the angle between these two sides are equal, then two triangle are congruent. See here triangle ABC and PQR. Here triangle ABC, here triangle PQR. Here triangle ABC and here triangle PQR. ABC and PQR. See here, sides are AB 6 centimeter. AB 6, PQ is also 6 centimeter. AC is 7 centimeter. Here PR is 7 centimeter. And the angle between these two sides, angles between these two sides, angle A is equal to 70. Here angle P is equal to 70. See here, two sides of this triangle and between angle is equal to two sides of these triangles and between angles between two sides are equal, then triangle ABC congruent triangle PQR. But how you write it? See here, how you write it here? See here, in triangle ABC and triangle PQR. Here you write in triangle ABC
इन ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्रिंगल पी क्यू आर। हाउ यू राइट इट? अच्छा एक बात और आप ध्यान से सुन लो, अगर ये एंगल 70 है, अगर ये 70 का एंगल हम यहां कर दें, आप ये जो आपके मन में भ्रम है इसको दूर कर लो। अगर 70 का एंगल ए है, अगर यहां 70 का एंगल क्यू है, तो ये कांग्रेंस नहीं होगा, ये कांग्रेंस नहीं होगा। ये कांग्रेस तभी होगा जब दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल है। ये एंगल ए 70 है तो ये एंगल पी भी 70 होना चाहिए, तभी कांग्रेंस होगा। अगर ये एंगल क्यू यहां नीचे हमने 70 कर दिया, बीच का एंगल नहीं दिया है पी, तो ये ट्रिंगल कांग्रेंस नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो ब्रेन में, दिमाग में भ्रम है, इसको दूर कर लीजिए। अगर ये एंगल ए 70 है तो यहां पी 70 होगा, तभी कांग्रेंस होगा, क्योंकि जो एंगल है दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। सी हियर, हाउ यू राइट इट? हियर यू राइट AB is equal to PQ. Here you write AB 6 centimeter. Here PQ also 6 centimeter. AB is equal to PQ. In bracket you write given. AB is equal to PQ. Here AC is equal to PR. Here AC is equal to PR. AC is equal to PR. Given AC is equal to PR. Here angle A is equal to angle P. Here angle A is equal to angle P given. Then triangle ABC, congruous triangle, then triangle ABC, congruous triangle PQR. ABC congruous triangle PQR, and this property is known as SAS property. SAS, side, angle, side. This property is known as SAS property, side, angle, side. See here, I repeat it. In triangle ABC and PQR, see here, AB is equal to PQ given, AC is equal to PR, angle A is equal to angle P given. So triangle ABC, congruous triangle PQR, SAS. I am going to explain you about ASA. See here, what is full form of ASA? Full form of ASA is equal to angle, side, angle, side, angle, side, angle. Full form of ASA is equal to angle, side, angle. See here, how you explain it? Here is triangle ABC. Here is triangle ABC, and here is triangle PQR. ABC and PQR. See here, side BC is equal to QR. If there is BC 8 centimeter, BC 8 centimeter, and QR is also 8 centimeter. BC is equal to QR, and angle corresponding to this side, angle corresponding angles are angle B is 70, and here angle Q is 70. Q is 70. Here angle C is 80, and here R is 80. Here R is 80. Side and corresponding angle means angle which is formed on this side. Angle which is formed on this side, मतलब जो साइड है ये एंगल उसी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड आपका BC है और एंगल आपका AC पर बन रहा है। एंगल कहां बन रहा है? AC पर। तो फिर ये ट्रिंगल कांग्रेस नहीं होगा, तो ये ट्रिंगल कांग्रेस नहीं होगा। जो साइड है उसी पर जो है एंगल भी होना चाहिए। लिखो, इन ट्रिंगल ABC, इन ट्रिंगल ABC, इन ट्रिंगल ABC and triangle PQR,
and triangle PQR, ABC and PQR, BC is equal to QR. Here under you write BC is equal to QR, each 7 centimeter. Given BC is equal to QR, each 7 centimeter. Given BC is equal to QR, given angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q, given angle B is equal to angle Q. Angle C is equal to angle R. Angle C is equal to angle R, given. लिखोगे सो ट्रिंगल ABC, congruous triangle PQR. Congruous triangle PQR. Here is a property ASA. Here is two angle B and C, and one side here you write ASA. Here you write ASA, angle side angle. This property is known as angle side angle. See here, in triangle ABC and triangle PQR, BC is equal to QR, angle B is equal to angle angle Q, angle C is equal to angle R, triangle ABC is equal to triangle ABC is congruous to triangle PQR by ASA property. Now thanks to all of you for subscribe this video.